Assalamu alaikum, Ababeel 1 English language course. I hope you're all doing well. Today we are going to discuss some commonly made mistakes in English, which we either make while we speak or while we are doing the writing skills. Please let me know कि हमने ये जो है टॉपिक पहले कवर तो नहीं किया, आपको फर्स्ट पॉइंट से आइडिया हो जाएगा, बिकॉज एक्चुअली ये मैं अक्सर इसलिए पूछती हूँ क्योंकि मेरे मल्टीपल सेशंस चल रहे होते हैं अबाबील के, और समटाइम्स इट हैपन्स कि एक सेशन जो है उसमें जो है एक टॉपिक जो है वो रिपीट होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज समटाइम्स बीइंग ह्यूमन जो है मुझे लगता है कि ये तो मैंने इनको नहीं कराया, लेकिन वो मैंने कराया होता है. सो प्लीज लेट मी नो, प्लीज सेंड मी मैसेज क्विकली इन द चैट बॉक्स कि हमने ये ग्रामर मिस्टेक्स की हैं. आपको मैंने इसका ये पॉइंट पहले बताया है कोई ऐसा? सो ग्रामर मिस्टेक्स जो हैं वो हम बहुत कॉमनली करते हैं, और इवन इफ वी आर एक्सपर्ट्स इन इंग्लिश, it is not about being expert. This is something that we as English language speakers or English language writers keep making as a human. Anything that you're doing, mistakes जो हैं वो आपके part of life है. So we have to help ourselves and we have to help everybody around us in order to grow out of these mistakes. Grow out of these mistakes का मतलब है कि उनको ओवरकम करना है, उनको रिड्यूस करना है और अपनी लैंग्वेज जो है उसको प्रोफिशिएंट बनाना है. सो व्हेन यू आर गिविंग एन इंट्रोडक्शन में नॉर्मली शायद हो सकता है कि आपने ये एक्सप्रेशन सुना हो, मैंने जरूर सुना हुआ है. सो व्हाट यू से इज माई सेल्फ आई एम ज़ानिया जॉन. Myself is an incorrect expression. You don't use that. You simply say I am Zania John. I am Sidra Raheez. Or you can say my name is Sidra Raheez, but you can preferably say is जो एक अच्छा impression आता है, you can simply say I am and whatever your name is. So हम यहाँ पे myself जो है वो basically एक possessive pronoun है जिसको हम subject pronoun के साथ mix कर रहे हैं. Some people think कि myself use करके आप emphasize कर रहे हैं कि myself I am Sidra. So basically structure जो है grammar का, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो ये इनकरेक्ट हो जाता है जब आप माई सेल्फ यूज करते हैं. सो यू सिंपली हैव टू से, मेक इट वेरी सिंपल, आई एम सिद्रा, आई एम whatever your name is, right? So मिक्स नहीं करना. माई सेल्फ इज अ पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेशन यहाँ पे नहीं शो हो रही. I am having 2 brothers and 1 sister. This is a very common mistake that we normally make. I am having 2 brothers. Present continuous tense जो है वो यूज नहीं होता जब आप कोई pragmatic या practical matter of fact की बात कर रहे होते हैं. Pragmatic क्या होता है? Practical बात, reality, matter of fact. उसके लिए continuous tense जो है वो यूज नहीं होता. उसमें simply आप present, simple present tense यूज करते हैं. When you're telling about a reality, when you're telling about a fact, you say I have 2 brothers and 1 sister. So have over here is coming as the first form of verb. And this is the correct way to say it. Okay? I am having is completely wrong. She do not have a dictionary. हमने जब simple present tense किया था, हमने उसमें discuss किया हुआ है do और does जो है वो आपका use होता है negative sentence और question sentence बनाने के लिए, लेकिन आप third person singular जो कि he, she, it है उसके साथ does use करते हैं. उसके साथ आप do नहीं use करते. बाकी जो आपके persons हैं first person, second person and third person plural, उनके साथ आप do use करते हैं. So she does, he does, it does. I do, we do, you do, and they do. So do not should not be used after the subject pronoun he, she, and it. ठीक है? Do not आपने use नहीं करना. Simple indefinite tense है, present tense है, negative sentence में आप I do not have a brother कहते हैं. फर्स्ट पर्सन के साथ आएगा हम यहाँ पे, और I, we, you and they के साथ आएगा. लेकिन she, he and it के साथ आप does यूज करेंगे. She does not have a pen to write. Does she has a bicycle is incorrect. Does जब आता है तो आप हमेशा first form of verb लगाते हैं. Does she have a bicycle? She has a bicycle because we are using she has a bicycle, she does not have a bicycle, or does she have a bicycle. ठीक है? लेकिन जब उसको जैसे ही do और does सेंटेंस में लेके आते हैं तो साथ ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है. The helping verb does is used at the beginning and the main verb have denotes possession or ownership.
तो यहाँ पे पोजेशन और ओनरशिप भी शो हो रही है और रूल के अकॉर्डिंगली आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करें. यूज ऑफ हैज एंड हैव विद फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. तो जो आपका हैज और हैव है वो भी आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंगली यूज करना होता है. इनकरेक्ट क्वेश्चन, टुडे ऑफिस इज देयर. आंसर, नो ऑफिस इज नॉट देयर, टुडे इज पाकिस्तान डे. ये कहीं हॉलीडे की बात हो रही है कि एक हॉलीडे आ गई है, तो पूछा जा रहा है कि क्या ऑफिस ऑन है या ऑफ है. सो somebody says today office is there. इट मीन्स कि आज वो यहाँ पे था और वो कहीं मूव करके कहीं और चला गया ऑफिस. इस सेंटेंस का ये मतलब समझ आता है. नो ऑफिस इज नॉट देयर, नहीं जी ऑफिस जा चुका है, खत्म हो गया, भाग गया. दिस इज रॉन्ग. You simply have to say, is today a working day or are we working today? And the answer will be yes, we are working today, or no, we are not working today. Yes के बाद भी यहाँ पे comma आएगा. So when you are talking about a day that is on or a day that is off, you simply say it is a working day or it is not a working day. Last before year they got good grades. ये इनकरेक्ट है क्योंकि जब आप बात कर रहे होते हैं कि पिछले साल से पहले ऐसे हुआ या पिछले मंथ से, लास्ट मंथ से पहले ऐसे हुआ, लास्ट वीक से पहले ऐसे हुआ, कल से पहले ऐसे हुआ. सो आप ऐसी सिचुएशन के लिए ईयर बिफोर लास्ट, मंथ बिफोर लास्ट, वीक और डे बिफोर लास्ट कहते हैं. लास्ट बिफोर ईयर इज a completely wrong expression. So year before last they got good grades. The day before last, I was extremely occupied in my assignments. Month before last, I went to America to meet my relatives. So इस तरह आप यूज करते हैं expressions जब आप गुजरे हुए टाइम की बात करते हैं कि अब से पहले ऐसे हुआ या एक साल पहले ऐसे हुआ था, पिछले साल से पहले ऐसे हुआ था या पिछले मंथ से पहले ऐसे हुआ था. Then you use this expression. That only she is very arrogant. That only incorrect है. जब आप कह रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कोई बात बताई है, ठीक है, किसी के बारे में, और फिर आपको पता चलता है कि जब आप उसी बंदे से जिसके बारे में मैंने आपको एक बात बताई है, जब आप उससे मिलते हैं तो आपको पता चलता है अच्छा सिद्रा ने ये बात की थी, ये तो बिल्कुल सही हो गई, ये तो बंदा वाकई ऐसा है. तो उस टाइम पे मैं आपको कहूंगी सी दैट वाज व्हाट आई सेड, और आप ये भी कह सकते हैं दैट वाज व्हाट आई टोल्ड यू. मैंने आपको ये बताया था ना दैट शी इज वेरी एरोगेंट. So that only is wrong, but you can say yes, that was what I said, or that was what I told you, that she is very arrogant. अब आपने उससे बात की है तो आपको पता चल गया है कि वो बहुत arrogant है. So saying that only was the wrong way to emphasize what the speaker has already said. Speaker आपको ये बात already बता चुका है. बाद में आपने जब उस बंदे से मिला या कोई भी बात हो, कोई भी, it can be any example, जब वो बात आपको clear हो गई and you came back to me and you told yes she's arrogant, then I say see this is what I told you, or that was what I said, or that was what I told you. He did not wrote the test last week. Did के साथ आप first form of verb use करेंगे simple past tense में. जब आप simple past tense use करते हैं उसमें हमेशा second form of verb आती है जो कि wrote है, write, wrote, written. लेकिन जब आप उसको did के साथ negative या question sentence बनाते हैं, then you always use the first form of verb. ठीक है, he did not write the test last week. The helping verb did is followed by the present tense of the verb and not the past tense. So did जो है वो verb का जो present tense है which is the first form of verb वो लगाएंगे, past tense जो कि second form of verb है वो नहीं लगाएंगे. Incorrect, I cannot cope up with this pressure. Correct, I cannot cope with this pressure. Cope up का क्या मतलब होता है? Cope up का मतलब होता है कि किसी बात को बर्दाश्त करना या किसी बात को फेस करके, उस सिचुएशन को फेस करके उसको बर्दाश्त करना या उस सिचुएशन से गुजरना. How you are going to cope with it? आप उसको कैसे फेस करके हैंडल करेंगे? How do you manage or handle something? इसका मतलब होता है cope with का मतलब ये होता है.
तो आप कभी कोप अप नहीं कहते, कोप अप विद नहीं कहते, आप सिर्फ कहते हैं कोप विद। फॉर एग्जाम्पल, बड़ी सिंपल एग्जाम्पल है, अबाबील इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है, आपने इसमें एडमिशन लिया हुआ है और डेली जो है हम इसमें डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं और उसके साथ साथ आपको मल्टीपल असाइनमेंट्स मिलती हैं और डेली क्लास होती है, जस्ट वीकेंड पे ऑफ होता है, लेकिन वो भी जो ट्रेनर है वो वीकेंड पे भी आपकी क्लासेस ले लेती हैं और वर्कलोड जो है वो आपका इंक्रीज हो चुका है। सो आप कहते हैं कि डेली जो है हमें काम मिलता जा रहा है, डेली जो है सेशंस होते जा रहे हैं, वर्कलोड इंक्रीज हो रहा है। आई कैन नॉट कोप विद दिस प्रेशर, विच मीन्स कि मैं इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकती या मैं इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकता क्योंकि काम बहुत ज्यादा है। सो आई कैन नॉट मैनेज इट और आई कैन नॉट हैंडल इट, इसका मतलब ये होता है। और ये जो एक्सप्रेशन है कोप विद, ये प्रोफेशनल्स जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी ये मिस्टेक करते हैं। तो स्टार्ट यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। अगर आपको दिन में कोई आपने एक्टिविटी की है, कोई काम किया, ऑफिस वर्क आपका ज्यादा था या आपको कुछ असाइनमेंट्स वर्कलोड मिला हुआ है, आपका होमवर्क जो है वो ज्यादा है, और यू आर डूइंग वन प्रोजेक्ट आफ्टर अनदर, या फिर आप जो है कोई ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं और उसके अंदर आपको वन प्रोजेक्ट अनदर आ रहा है और उस प्रोजेक्ट के साथ साथ आपको रिविजन्स भी आ रही हैं, यू आर जस्ट गेटिंग tired of it and the pressure is too much, so you can say, well, I cannot cope with this pressure. ठीक है, आप अगर आपने यूज करना है तो उसके लिए एक एक्सप्रेशन होता है फॉलो अप। ये जस्ट मैंने जब कोप अप को देखा था तो उसके साथ मेरे माइंड में ये फॉलो अप आ गया था, तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया कि ये एक्सप्रेशन भी यूज होता है। फॉलो अप का मतलब होता है कि जब आपने, गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे, अगर कोई हॉस्पिटल जाता है और उनका वहाँ पे ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन के बाद जब आप कुछ डेज के बाद दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं और आपने अपना चेकअप कराना होता है इन ऑर्डर टू चेक के एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, द ऑपरेशन वेंट वेल, जो मेडिकेशन ली जा रही है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका भी इफेक्ट ठीक आ रहा है, एंड द वुंड इज गेटिंग हील्ड, और पेन और जो भी अगर कोई इश्यूज हैं उनकी क्या सिचुएशन है, किस सिनेरियो से आप गुजर रहे हैं, तो डॉक्टर के पास आप जाते हैं जब दोबारा चेकअप कराने के लिए, उसको आप कहते हैं फॉलो अप, विच मीन्स कि आप एक फॉलो अप के लिए गए हैं देखने के लिए कि इज एवरीथिंग ओके। तो फॉलो अप डिफरेंट सिचुएशंस में हो सकता है, यहाँ पे मैंने हॉस्पिटल की एग्जांपल दे दी है। आई केम टू ऑफिस बाय वॉक, दिस इज इनकरेक्ट। बाय जो है उसके साथ आप प्रॉपर व्हीकल्स के नाम जो है ना, ट्रांसपोर्ट जो है उसको यूज करते हैं जब आप बाय प्रेपोजिशन यूज करते हैं। यू डू से आई केम टू ऑफिस ऑन फुट, तभी आप ये नहीं कहते आई केम टू ऑफिस ऑन वॉक, दैट इज रॉन्ग। आई केम टू ऑफिस ऑन फुट। जब आपने बाय यूज करना है तो आप कह सकते हैं आई केम टू ऑफिस बाय कार, बाय बाइक, बाय बस, बाय ट्रेन और बाय फ्लाइट। सो बाय वॉक नहीं आता, लेकिन जब आप चल के जा रहे हैं विच इज बीइंग यूज्ड टू ट्रैवल एंड नॉट वॉक, तो फिर आप जो है ऑन फुट जो है वो कह सकते हैं। फुट जो है वो ट्रैवलिंग के लिए नहीं यूज होता, ठीक है। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच इज इनकरेक्ट, यहाँ पे आपकी प्रपोजिशन बाय आएगी। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। Our classroom is in the second floor. It is not in के अंदर नहीं है। Our classroom is on the second floor. Second floor के ऊपर। अच्छा, ये डिफरेंसेस हैं कुछ। पोजेशन, योर जो है वो पोजेशन के लिए यूज होता है। मैं आपको पोजेसिव प्रोनाउंस और पोजेसिव एडजेक्टिव्स करवा चुकी हूँ, उसमें योर जो है वो पोजेशन शो करता है। यूर प्रोनाउंसिएशन देखें, ये यू आर का शॉर्ट फॉर्म है। दे आर इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दे आर। देयर THEIR पोजेशन शो करता है थिंग्स और पीपल के लिए, एंड THERE देयर जो है वो डायरेक्शन या प्लेस शो करता है। इट्स पोजेशन एंड इट इज कॉन्ट्रैक्शन है। जब आप पोजेशन के लिए इट्स यूज करते हैं तो तब आप कभी एपॉस्ट्रोफी जो है वो एस के साथ नहीं लगाते। टू जो है वो आपका लोकेशन शो करता है। इट इज प्रपोजिशन, आई विल गो टू द मार्केट, सो direction, location, to the market. To, TOO2 also, it is an adverb, and TWO2 number. R जो है वो to be auxiliary verb है, and R जो है वो possession शो करता है। Our bag, our rooms, our home. So ARER जो है वो आपका to be auxiliary verb है जो कि present tense में यूज होता है। Apostrophe S is used to show possession. It does not make the plural forms. Please, apostrophe S जो है, apostrophe S
वो प्लूरल फॉर्म्स के साथ लिखना ड्रॉप कर दें, बिकॉज दैट इज नॉट प्लूरल्स जब हम बनाते हैं तो उसमें कभी हम अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते। एनाज बैग इज लवली, तो ये पोजेशन शो कर रहा है यहाँ पे, एक नाउन के साथ आप पोजेसिव प्रोनाउन सॉरी नाउन के साथ आप अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे उसको पोजेशन शो करने के लिए, दैट दिस बैग बिलोंग्स टू एन। if this is okay, this is oops, ये मैं आपको असाइनमेंट जो है वो कल दूंगी, ठीक है। टुडे आप जस्ट ये जो आपकी मिस्टेक्स हैं इनको आप यू विल जस्ट गो थ्रू देम, ठीक है। That is all for now, and now I'm going to end the session because I have a live webinar coming up. So for that reason, मैंने आज आपकी क्लास early ली है. Thank you very much for joining the session early. And if you have any problem in these mistakes that we've discussed, आप उनको WhatsApp group में question forward कर सकते हैं. So that is all for now. And inshallah मैं आपको जो ये listening का audio track है ये मैं कल आपको inshallah ज़रूर दे दूँगी, and we'll work on this as an assignment. Take very good care of yourself and see you tomorrow inshallah. Take care and Allah.